হে এভরিওয়ান अस्सलाम वालेकुम কেমন আছে আমরা ভালো আছি আশা করি सभी ভালো আছে भाई कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं आज आपके साथ नादिर ऑन द गो। हमने एक पोस्ट देखा फेसबुक पे जिस पे आया हुआ था कि यार इन ब्लॉगर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है वो आज हम देखेंगे। और इनको काफ़ी बड़े ब्लॉगर्स भी बांग्लादेश के हैं जैसे तौहीद, उनके साथ कंपेयर किया जा रहा था कि उनका कंटेंट और इनका कंटेंट में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये नए क्रिएटर था, इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इनके ब्लॉग को हम भी अब देखने वाले हैं कि ये नए क्रिएटर है, तो नए क्रिएटर को हम वैसे ही शौक होता है कि यार देखें नया क्रिएटर कैसा कर रहा है। तो नादिर ऑन द गो, इनके चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन। ये पहुंच चुके हैं इस वीडियो में सीरियन बॉर्डर पे, तो देखते हैं सीरियन बॉर्डर कैसा लग रहा है। स्टार्ट करते हैं। Behind me right now is Syria, and I'm in this historic Turkish city called Mardin, overlooking Mesopotamia, where all of civilization first started. And in this video, I'm going to give you guys a tour of this incredible and ancient city. Oh, भाई ये वही वाली है जो हम टर्की की सीरीज में देखते थे ना, ओल्ड जो बनाई होती है उन्होंने, लेकिन रियल में ये है हिस्टोरिकल। I just arrived at Mardin International Airport behind me. I gotta figure out how to flag down a local bus and then get to the city of Mardin. Wow. So this city is supposed to be a hidden gem. Not so hidden if you know geography, but it's right next to the Syrian border. And it's pretty fascinating. चेंज भी नहीं किया I hear the वैसा ही है बिल्कुल। people over here don't speak any English at all from my friends who've been here before. But I've also heard they're like some of the most friendly people, so I'm pretty excited to see. इस तरह की सिटी के टॉप पे महल होता था सुल्तान का, and nature and hikes is fun and all, आबादी। but this kind of travel is what I live for. And this is actually my third day here, the start of my second full day. And I couldn't really film yesterday because it was really cold and really rainy. The sidewalks here are so freaking narrow sometimes, like you just gotta get on the streets. Just one street going through the entire old city, and the kids here are like following me and seeing what I'm doing, because I'm sure they don't get a lot of YouTubers or bloggers. This is located on a very strategic hill close to the Tigris River. The Tigris River is actually one of the two main rivers in the region of Mesopotamia, which led to Mesopotamia being the cradle of civilization, as it is called. The whole city is designated as a UNESCO heritage site because of how much history is in the building. If you look around you, you'll notice that pretty much every building around me is made from the same beige-colored limestone material. Oops. Almost got run over, but the guy smiled at me. I always think what's the most interesting about Turkish tea is that it doesn't come with the cup handles, you just have to hold it like this. As you can see, we have our very first views of the Mesopotamian Valley. This city by itself has been hosted फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ये वाला सिटी जो है, part of हमने तो मॉडर्न टर्की की वीडियोस dozen पे देखा kingdoms from what I can remember, and that's why very different kinds of people still live here to this day. This region is predominantly Kurdish people right now, but there's also a lot of Arabs, and the city of Mardin is tourism place 50-50 split between Arabs and Kurds. There's also a lot of Turks. Turkey is all about still inside Turkey. Also, a few people left who belong to the मॉडर्न वाला तो खैर दूसरी टूरिज्म है, लेकिन ये जो है ना all the way back to more than 4,000 years ago. इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। Very famous for having the same language that is very directly related to what Jesus Christ used to speak. So this place is turning out to be the craziest experience ever. The guy who I paid for my tea was trying to tell me something in Turkish and was asking me where I'm from, and then was like super excited, and then like pulled out Google Translate, and he was offering me to stay at his place with him for free, which is ridiculous, which basically never happens anywhere. And then, you know, as I'm walking down the sidewalk, everyone I meet is just like super happy and so excited that someone's visiting. You don't really get to see that every day. ये किसी जानिसार का घोड़ा तो नहीं बच गया पीछे? Seems to be a very popular spot for selfies around town. क्या शॉट्स लिए हैं भाई बॉय ने? इस
बंदे से थोड़े से व्लॉगिंग स्किल्स सीखना चाहिए। सिंपल और फिर भी इतने वो कोई बीच में इफेक्ट्स और वो नहीं डाले हुए, लेकिन फिर भी इतने अच्छे लग रहे हैं। क्रिएटिविटी। इस सिटी में आ रहा है थोड़ा सा अरब टच आ रहा है, पाकिस्तानी भी, एशियन भी। पाकिस्तानी तो नहीं, एशियन। टिपिकल तुर्किश चाचा जो उनके ड्रामा में इंग्लिश वाला होता है। How do you pronounce it? Madrasa. Madrasa. I met Mehmet. You guys are the gimbal. Mehmet, another friend, and everyone is so friendly. Mehmet. Just give me burek. Yes. Like not just this burek, like a whole bag of bureks, and it's in my bag now. I found that outside of Istanbul, like, not a lot of people speak English unless you go to university. That's like the only common thing, right? This place is the most beautiful view of Mardin. I didn't even come up here yesterday because I didn't know how to get to the top of this building, because the language barrier is very real if you're not speaking to people who are in university. I can speak English with little bit. Man, this is such an incredible place. The hospitality of people I'm little left and right is ridiculous. I have never seen anything like it, except for maybe in some very remote places in the Balkans, like Albania, where strangers who don't even speak the language want to come up and just give you food and hang out with you and spend time with you, and they're just really thankful to have people around. And it feels great to visit places like this. Not necessarily as fancy, doesn't have the tourist infrastructure as like many other more popular places, but I think everything else that you get from here makes it better than those touristy spots, at least for me. So वो पीछे behind कोई me मॉडल right हर there पोज में is Mardin Kalesi, or चिपक the चिपक के Mardin picture। Castle, which is the most imposing structure in this whole town, and it's on top of this hill. Unfortunately, you can't get to it right now, as you might have figured out from all the barbed wire around that castle. And there's also like a NATO tower there, so they take this security for this castle pretty seriously. So don't try crossing those barbed wires unless you want to die. How are you? ये तो सिमिलर कैट है जो हमारे यहाँ भी ब्राउन वाली। On YouTube. Yes. YouTube aja gel bizi. YouTube. कह रहे यूट्यूब अपना गोल करूँगा। खुदा मारा है। सीधा पाओ। राजा तेरा। That kid just वही नहीं बचा। उसके सर पे ही मारना। Wonderful यार। यार क्या मतलब यूरोपियन टाइप की स्टाइल। अरेबिक म्यूजिक बीच में डाला हुआ है। It looks more of an Arabic country than। और इस टाइम तो ऐसा ही फील आ रहा है इसको देख के जैसे कोई वो मुगल शुगल होते थे और पीछे सुल्तान उस टाइप का बिल्कुल बना हुआ है। than the mosques that I grew up to going. I actually went inside to take a look. Obviously wasn't vlogging there, just to be respectful of the people that are praying around me. That is definitely something you want to do. Probably can't even film in most mosques, but people for the most part seem to be cool in Turkey. As long as you're not interrupting anyway. If you do go inside, obviously take off your shoes before you go inside and clean yourself properly. There's like washing stations outside of each mosque, because this is a place of worship, and last thing you want to do is piss people off when they're trying to worship, and it's just not a nice thing to do, you know. How are you? Pretty good. How are you? Where are you from? Bangladesh. Bangladesh. Yes. Oh, So Bangladesh. I'm at the market again, and people are just so friendly. Bangladesh। One thing I'll never get tired of in Turkey is all the ये cute अपने आप गाँव dogs. वाला एरिया Everywhere. Dogs are fighting. Let me find a quieter spot. अभी तक लोकल से ज़्यादा मुझे पीछे टूरिस्ट ज़्यादा नजर आए, यूरोपियन और डिफरेंट कंट्रीज के। Madrasa behind me, which is the other famous madrasa of Mardin. Unlike everything else that is famous in Mardin, this one's a little bit away from the city, and there's also another incredible view of the valley towards Syria over here. Not as nice, I'd say, as it was from the other one, but it's still a pretty damn good view. So I'm gonna go inside, check it out, and see what this is like. This dog is going crazy. Dog is going crazy. क्या ही बात है। ऐसी जगहों पे व्लॉग बनाने का मजा भी आता है।
The view might have been better from the top of the उन्होंने last one, डिजाइन but I'd say पुराना the रखा है interior लेकिन architecture is फैसिलिटीज न्यू definitely प्रोवाइड की हैं just as cool in this one, if not better. यार The ग्लोब green water is वगैरह also a और lot cleaner than the other one. वाटरफॉल्स Jump in it, man. ब्यूटीफुल सिटी Wonderful. Okay, जी wonderful Nadir on the go. सब्सक्राइब करें भाई। भाई वाकई कैसा क्या ही व्लॉग है, कमाल इंग्लिश है। में सारा व्लॉग बनाया और लड़के ने, और बड़ा खूबसूरत किस्म का सिंपल, और जो सिनेमैटिक्स डाली थी वो भी काफी भाई बेसिक किस्म इस की और सिटी को बहुत तो वैसे ही यूं अच्छी। करते तो वो फिर ये सिटी हाँ, ही क्या ही कमाल बात है, क्या इसको ही तो बात कैमरे की जरूरत ही नहीं इस सिटी को। मे बी यू राइट के बेस्ट व्लॉगर ऑफ बांग्लादेश, मे बी आई नीड टू सी द कमेंट सेक्शन के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। और ये इस टाइप का हम इनका कंटेंट जरूर देखेंगे डिफरेंट के किस टाइप का बनाते हैं इंटरनेशनल कंटेंट है, और हमें जैसे भी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तुर्की से लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हमें भी तुर्की अगर ये घुमाएंगे तो हम भी उस लिहाज से देखते जाएंगे। यस मज़ा आ जाएगा और इनके मज़ीद वीडियोस भी देखेंगे। हमें स्टार्ट में तो लगा कि सीरिया का नज़र कुछ आएगा, मे बी सीरिया जा रहे हैं, लेकिन टर्की दिखाया और बस सीरिया का तो वो दिखा रहे थे कि नीचे है वो। लेकिन ये सिटी भाई मैंने पहले कभी नहीं देखा, मतलब मार देन ड्रामों में देखा है इनके कि वो जो पुराने होते थे वो भी इस तरह की का। शॉट्स दिखाते हैं ना, हाँ, ड्रोन्स। तो वो तो खैर फेक भी खुद वो एनिमेटेड हाँ, बना के दिखाते थे, लेकिन ये एक रियल सिटी है और इसको तो यहाँ से देख के जितना मज़ा आ रहा है इतना लाइव देखने और घूमने का तो अपना ही मज़ा होगा। और ये सबके लिए स्पेशल है, यूरोपियंस के लिए, अरब्स के लिए, एशियंस के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक सेंट्रिक सिटी है। हर तरफ से पहले यूरोप का भी यहाँ पर कंट्रोल रहा था बहुत सदियों पहले, तो सबके लिए एक था, लेकिन मज़ा आ गया देखने में। फिर मिलते रहेंगे इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ और इनको जाके जरूर सब्सक्राइब कर ले जो लोग नहीं जानते। करें वीडियो को। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।